Good morning to all of you, dear students. As we know that we completed question 4 तक हम complete कर चुके हैं, and so we will start with question number 5. So give two problems which arose with the new Monroe system of fixing revenue. So there is two problems. There is a problem that revenue official fixed a very high revenue demand and peasants were unable to pay it. And second, riots felt the countryside and villages become deserted in many regions. So this is two reasons which is Monroe system was failed. Okay. अच्छा. Second question. Why were riots reluctant to grow indigo? So there is many reasons the peasants were not wanted to growing the indigo crop in their region. So the planters usually force the riot to sign a contract. Those who signed the contract got cash advances from the planters as at low rates of interest to produce indigo. So as I told you that जो contract होता था वो क्या करता था कि लो रेट इंटरेस्ट पे क्या करता था देवर गिवन द पीजेंट्स को इंटरेस्ट के साथ जो लो इंटरेस्ट रेट पे क्या पे करता था एंड लोन देता था बट द लोन कमिटेड द रेट इज कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग. सो 25% एरिया पे पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था. सो they would कल्टिवेटिंग द इंडिगो एटलीस्ट 25% लैंड. ठीक है, जो भी इनके पास लैंड होती थी वो 25% लैंड पे उनको इंडिगो कल्टिवेटिंग करनी पड़ती थी. सो द प्लांटर प्रोवाइड द सीड एंड ड्रिल while cultivator prepared the soil so the seed and looked after the crop. When the crop was delivered to planter after the harvest, the rayat got another new loan. So there is a process, there is a cycle that एक बार तो उन्होंने क्या किया, लोन दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, प्लांटर्स ने, ठीक है, पीजेंट्स को. फिर 25% एरियाज में उन्होंने क्या कल्टिवेटिंग की इंडिगो. एंड व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप दे वर डिलीवर्ड द प्लांटर एंड आफ्टर उनको फिर दोबारा से क्या है ऐसे ही लोन मिलता था. बट धीरे धीरे क्या हुआ, दे डिड हार्ड लेबर डे एंड नाइट एंड गॉट अ वेरी लो प्राइस फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड. सो other reason was that the planters usually pressurize the rare to cultivate indigo on the best soils, but the rare preferred to grow rice on these soils. Indigo had deep roots and it excavated the soil rapidly. So indigo की क्या होती थी, जो roots होती थी, it was very deeply and it is not good for the land of fertility. तो इसलिए क्या है कि जो पीजेंट्स हैं वो रेलिकेंट थे इंडिगो को ग्रो करने के लिए. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो. 6th और 7th थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बट 6th में अगर देखा जाए तो यू कैन सी दैट ये एक प्रोसेस है, लाइक एक स्टोरी टाइप है जिसमें जो उनके साथ हुआ. सो यू कैन राइट इट योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. ओके. व्हाट वर द सर्कस मैन्स which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal. So there is and the riot in Bengal got fed up with the corrosive method the planters use with them and finally refused to grow indigo. They become violent. They not only refused to pay rent to the planters but also attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Pigeons when the जो उनका उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड. तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बैटल करनी स्टार्ट कर दिया है. दे वर अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्री एंड जो भी प्लांटर्स हैं उन पर अटैक करने लग गए पीजेंट्स. एंड जो लोकल ज़मींदार हैं, हेडमैन हैं, दे ऑल्सो विद देम. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission. So as I told you that Indigo Commission जो है उन्होंने बनाया था. And to inquire into the system of indigo production, the commission held the planters guilty and criticized them for the
कोर्सिव मेथड दे यूज़ विद इंडिगो कल्टिवेटर्स। सो जो इंडिगो कमीशन बना था उसमें क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ 1858 में ये टाइम था। 1857 में जो इंडियन म्यूटिनी हुई थी। सो देयर इज़ वहाँ पर क्या था कि अभी भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी कि और अलग से जो लोग हैं वो नाराज़ हुए हैं और ज़्यादा म्यूटिनी करें। सो देयर इज़ pressure for the ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर फेवर। उन्होंने कमीशन हेल्प किया एंड उन्होंने प्लांटर्स को गिल्टी पाया। द कमीशन आज द राइट टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। सो उनको उस कॉन्ट्रैक्ट को तो अभी तक करना था पर आगे वो फ्यूचर में उनको मना कर सकते थे। आफ्टर दिस रिपोर्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। ओके, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छुटे हुए हैं। वी विल डू इन दिस एक्टिविटी, हम उस एक्टिविटी में करेंगे, ठीक है। मैं उसको सेंड करूँगा आप लोगों को। ओके, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं यू हैव टू डू। ओके, और प्लीज़ सी द वीडियो ऑल्सो। एक्सप्लेनेशन कहीं पर एक्सप्लेनेशन जो मैं करता हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम और एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स तो यू कैन टेल मी। ओके, दिक्कत होती है मेरे को क्वेश्चन करो, बताओ, ठीक है।